नहीं खाई फिर ओए ये नूब है कसना सुल्तान इधर नूब खेलने नहीं का जैसे जगह बॉट खेलना है तगड़ा ओए सुल्तान के साथ 1v1 खेलना तो मारे आगे भी कितनी बड़ी बेइज्जती करानी नहीं ये तुझे कपड़े है तेरे पे सही बात है यार 5 यार उलास गेम क्यों अटक रही है? रुकना छोटू, कपड़े ले। आईफोन है ना। मेरी अपनी दिखती है इसके अंदर मेरा से कौन है मेरी एंड्रॉइड रहना तेरे पास। मंडी जरा जाने दे तू मिलता है मिलिट्री। देखा बात होती है मिलता है मिलिट्री। ओह बकवास नहीं कर। मिलिट्री जाऊंगा मैंने किया ना मार इधर करो। ऐसे ही करते हैं मार। हाँ ऐसे ही करते हैं ऐसे ही करते हैं। अब टेंशन नहीं है अब हमारे साथ हमारा चौथा बंदा प्रो है अब कुछ नहीं हो सकता। उलास मेरा मार तो नहीं आता है तुम लोग। उलास मेरे मार तो यार विवेक की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए यार। विवेक के साथ हर बार गलत होता है। कहता आप यार ना मैं मरने ने मेरे को ला। इतना मैं पीछे से था चल रही। मंडी दो बंदे उधर भी जाओ ना, दो बंदे इधर जाओ, सी बिल्डिंग जाओ। Watch out! मैं तो इधर आया हूँ। भाई चार बंदे आए हो तुम इधर, तुम पता है इधर लूट नहीं होती। आ जाओ मैं इधर Marked a location. सामने बंदा है मगर अब वो उस साइड से आएगा। यार मेरी गोली भी खाली है। साथ वाली बिल्डिंग में बंदे हैं। ठीक है मंडी, I got supplies. स्कारल है मेरे I got supplies. नेड आ तो करो इधर। यार मैं उधर आऊं आपके पास? आ जा डर के। बंदे तो नहीं है। I'm out. Need ammo. ओए बात जंप किसने मारी? यार मुझे गोलियां ही नहीं मिल रही, कहाँ तुमने वो लगाई? इधर मुझे कच्ची मिल रही है। पूरे 4 बंदे हैं, कोई फुटस्टेप नहीं आ रहा। मेरे को एक गोली मिली है पर वो खाली है यार। मैं यहाँ से ऊपर Watch out! वो यार बंदा है इधर मेरे पास। यार इधर मेरे पास बंदा है लस। यार सुने तू कहाँ ना हो कोई ये। मंडी दो नॉक है जल्दी घुस दो। मंडी कहाँ है? बंदे किधर हैं यार? यार नीचे मंडी हद हो गई है यार।
वो रिवाइव दे रहे हैं। मंदी रिवाइव दे रहे नाल दी स्क्वाड में नहीं यार हमारी टीम ही नहीं है, सीधी सी बात है ही नहीं, कोई कॉल का सीन ही नहीं है कोई। यार 2 नॉक है तेरे को 2। बस बोला हबीबी, बोला हबीबी, ए मैं मनूस आया है दी वजह ना मरे गए। बोला हबीबी। लस्सी ओए एक यार छोटू तू मेरे साथ था, छोटू तू मेरे साथ था, 2 नॉक स्लाइड निकाले, मार, एक तू नहीं स्लाइड निकाल मारनी थी सकता था। साले। बॉट है मैं तो साले पे बॉट है। ओ चुप कर, स्लाइड मार, उधर स्लाइड मारनी थी है। भाई हम भाई टीडीएम में भी स्लाइड ऑफ करके खेलते हैं। फिर मैंने नाइट शुरू की है सर। बोला छोटू यार हबीबी। एक तेरा भाई उधर भाई टीडीएम है नहीं क्लासिक हुआ। वेरी वेरी डिफरेंट। तू नॉक हुआ तो पहले। हाँ देखी क्लच हुन। क्लच से याद आया यार, बाइक का रहने दे। बोल हाँ तू कहाँ दो लॉस से कपड़े ले रहा है, मतलब फिर क्या ही बोलूं। ऐसे कौन सा सूट है तेरे पास जो ले रहा है ये? ओ यार सीजन 6 वाला। अरे ये देख, ये देख, देखिए देखिए मैं कैम्बो देखे तेरे किधर गया लॉस। तो तो चुप का कह क्लोज एनकाउंटर जतिन को थोड़ी हराया भाई तूने। मंडी हुई पता कहाँ पे थे? मिलिट्री जाने मिलिट्री जाने पंडे तुम्हारा पेटी बना गया तू 100 मीटर पहले डाई मारी है। नहीं यार मैं इसको नहीं पता। ओए बंदा बड़ा लेट स्ट्रीम कर रहा है। रुक बेसिक करिए मंडी दे आगे आगे स्ट्रीम करता है। क्यों नहीं दसते पहले फोन देखा नहीं भाई क्या एक गोली नहीं है इधर, एक गन नहीं है, सिंगल गोली नहीं। कोई नहीं पेटी बनेगी तुम्हारी, भाई के पास पड़ी हुई है। भाई को हमारे Watch से out! दूर रख। Watch out! बंदा आया चुप तो मारना आया। उसने तो लद्दी डाल दिया। मेरे पीछे आओ Form up on me! Let's go! चल मेरे को हेलमेट वेस्ट नहीं है, क्लच बाद में भी कर लेंगे। क्लच के नीचे लोंडा बात ही नहीं कर रहा। कैमरा सेंसिटिविटी ज्यादा की है मां तेरी। कोई नहीं, ठीक कर ले, क्लच बाद में कर लेंगे। चल एमो जेट में आई है ना। बंदे तेरे पीछे ना होता आगे दूसरी जिस साइड जा रहा है उधर बंदे। हाँ बंदा
सुल्तान भैया यहाँ तो मारा करो, किल ना चोरी बदतमीज में। और वन चल भाई चल यार, चल 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 जतिन साथ है कोई। देखिए हम पेरी ऊपर गोड़ी जो तो चलो फिर क्लच करचे। पहले इधर चलो, तीनों वाली साइड, कंटेनर वाली साइड। Watch out! मैंडी जा तो जिसके साथ कंटेनर तो जा रहा है ना पेटी है मेरी। तो यार बड़ी को मंडी आ, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ ए स्पॉट हम तो आगे अभी पर लबी मंडी हर जगह पे करेगा, जतिन क्लच करेगा बाकी सुल्तान चंगा नूब है। क्लच, जतिन क्लच। जतिन तो पीछे भी पेट पे बैठ के नहीं बैठ के जतिन। ओए कवर देना सोरी दिया। ये देखो उड़ते उड़ते लुटदा मैं साला। नहीं नहीं पीठ दिखा दी मंडी इसने तो। राइट से बंदा आ गया, राइट ये चल एक सो आ किल कंफर्म कर रहा। नीले नीले कितने ज्यादा ए पीछे से पड़ेगी यार उसको। ओ भरावा ये कहां पे बैठे नूब यार। ओ भाई मार दे नूब भी कोई। सियाने बंदे की ओ बात मार मानते हैं बंदा क्या? यार केड़ा नूब है गेम खेला। नो अरे नूब इकट्ठे किए थे। जतिन भैया का क्लच रह गया। सियाने बंदे की गल बोल रहा हूँ, इसको पीछे से पड़ेगी पड़ेगी। सियाने बंदे सलाह नहीं ना लंदा मारे जांदा। बंदी आखिर टीडीएम खेलो जीएस स्लाइड मारो बस। टीडीएम ही आजा भरावा, आजा आजा। आजा आजा कंध करना हाँ आजा आजा। कंध करना खड़ोते दा गोला अद्धे घंटे एक गोली दी चला कम से कम। नहीं तू ज्यादा की लैंड तू ते कल्ला भी गल सुना पहले। मैंने क्या कहा मैं भी चला, मैं भी नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल आखा ज्यादा की लैन चार बंदे ऊपर चढ़े ज्यादा की लैन। भरावा मैं ये टीडीएम पे मतलब चुप चुप ही कर गया मन में आगे से कुछ नहीं बोला। इसने मैच सुल्तान को हराया हुआ ना, सुल्तान को कह रहा था स्लाइडे मारो सुल्तान वही नहीं है, सीरियसली कहा ना तू सही से चूती चल ठीक है। जितना ही सब
चूतिए ने। आराम से मैं तो इस साइड कवर ले रहा हूँ, साला इधर से घूम के मार गया मेरे को। वह उन्होंने हम देखा नहीं, पता है पहली स्प्रे च नाक होने चाहिए थी। स्कार नहीं मेरे को। और बाय बाय।
What else you do there?
They will extend, renew or allow students to enter when the borders are open and it's safe to do so. We've got tens of thousands of students around the world trashing Australia's reputation. They feel misled, they feel abandoned by the government. They can't even... We made you a promise, we will honour that promise. We may not be able to do it now, but we will honour it. It's not a difficult thing to do. And it'll help restore some of our international reputation. This is a sector that relies on word of mouth. I'm sure the Minister would agree with that. This is a sector which overwhelmingly relies on word of mouth from former students who've studied here, from current students saying to their mates and their families back home, Australia's a good place to come and study, you should come here. That's what marketing of international ed is fundamentally about. And the word of mouth right now for Australia is being trashed. It's a very small thing that the government could do, is extend that olive branch to students who've got a 485 visa or a right for post-study work rights, and say that they would be allowed to come back. Thanks, Deputy Speaker. Vicky, thanks so much for your time. You are among many leaders in industries today that's got together and really begged the premiers and the Prime Minister to get on board. What do you need to hear? Yeah, I think there is a growing chorus of concern from a wide range of groups, and I think the call today, the Group of 8 joining with the Farmers Federation and the tourism industry, just goes to the point about how interdependent, I guess, we all are on international trade and, in our case, obviously, international education and research. Look, what we're looking for is, we understand that the borders are closed for the appropriate reasons, and until a health advice says that we should open them, that's fine. But what we're looking for is some clarity and a genuine discussion around what steps we actually need to have in place to have those borders open in a safe and secure way. Safe and secure for people coming in our case our students, but importantly also safe and secure for our Australian population. Okay, And so we're seeking that clarity. Yeah, sorry to interrupt you there. Vicky, let's talk about the students, because it seems that there is a bit of a glimmer of hope here. There is some progress on it, and it might actually be the first cohort of international students that land there in Adelaide. Absolutely, and I am here in South Australia, as you quite rightly point out, and the universities in South Australia have been working very closely with the Marshall government and have had a lot of support from the state government to progress a plan, and it's a very well advanced plan which I understand that the state government is preparing to take through to the National Cabinet process. But we have had many plans. The Victorian government, of course, Victoria's in a very different situation at the moment, but over the last 12 months, they've had quite a well-developed plan. We've heard from the New South Wales Premier and the New South Wales universities and business community coming together. So, and I think the only place we've actually had international students come in is in the Northern Territory. And so, whilst we've had the plans at the state level, what we're really looking for out of the federal government and the National Cabinet process is what are the thresholds that you need to have required and met before we can have a safe rebuilding of our borders. So how many of the Australian population do we need to have vaccinated, for example? What are the quarantine requirements? We know that there are issues with hotel quarantine. We know that, as universities, we've certainly offered across the Group of 8 to have our residential accommodation used for quarantine. That's not appropriate, and we accept that advice. So what are the quarantine requirements that we can do this in a safe and secure way? And I think that's been the piece of the puzzle and the discussion that's really been missing. And the reason that it is important, obviously, is it's the signalling and messaging that it does send, in our case, to our students. So we have 30,000 students currently still offshore. Those students have stuck with us for the last 15 months. And to be frank, they probably will continue to, because they're in their 3rd or 4th year of university, so they've invested. Where the challenge is how do we get new students, new researchers, PhD students to want to come to Australia? And if there's no sort of light on the hill in terms of at least a progress plan to opening the borders, they will and they are going to our competitor nations. I spoke to the Education Minister, Alan Tudge, earlier this week, and he seemed to be pretty frustrated. Yes, he understands the situation that you've just laid out there about international students, but he says many universities across the country still do not even have Australian students
sure that's actually quite accurate, and I did hear your interview with Minister Tudge at that time. So on the group of 8 universities, we have around 400,000 students, and around about 250,000 of them are domestic students, or at least students that are here and studying. And my universities report to me that in most cases, up to 90% of classes are available and are face-to-face. Lectures aren't, and that is a different proposition. And of course, putting aside Victoria, where universities are obviously closed at the moment, lectures are slightly different because you do have large lectures with 250, 300 people. We simply can't offer them because of the density requirements that are imposed by various, and we understand that, state governments. But in most cases, our universities are open. हाँ कर मैं वो लाइव स्ट्रीम करना तो आजा कर Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! वाला हैक करा Expired! Reloading! Killing spree for the red team!
ऊपर ही है दोनों बंदे। Enemies ahead! Don't rush. Don't rush. Be careful! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Don't rush. Killing spree for the blue team! Form up on me. Form up on me. Enemy down! Reloading! Form up on me. Target down! Enemies ahead. Half of the match is over. And the red team is in the lead.